जी. So here are the types of programming languages. For example, first of all, let's go to the example. Can you make any sense out of this? You cannot make any sense out of this because this is something very understandable to the computer. String of numbers, ultimately converted to ones and zeros. It is very cumbersome for human beings to understand, isn't it? Yes, sir. Because it is machine dependent. That's why it's called machine language of computer. Natural language of computer. It's the inherent language of computer. Only language computer can directly understand. Natural language, machine dependent, ultimately to ones and zeros. We cannot make sense out of it. Let's do something better. So such type of language is called machine language. Go to the example. Now we can make some sense out of it, isn't it? समझ आ रहा है what is written over here. ये एक variable है. Variable is anything, something you can say location in the memory with some title, with some name. So purchase price is a variable, sale tax is a variable. अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल का पूरा टॉपिक आएगा, हम उस पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे. But just for the sake of understanding, these are the location in which some content is residing. Most probably in this case some integer content. This हमने लोड किया और उसको कर दिया. But again we have some compulsion, only one operation at a time, isn't it? Yes, sir. लोड करें, B करें. It is just like if we want to do A plus B, तो first of all हम A में लोड करेंगे, फिर B में लोड करेंगे, फिर A plus B करेंगे. 3 operations. So such type of operations in which we are only allowed to do one operation at a time are called elementary operations. So it says English-like abbreviations. Computer don't know what is written over here, isn't it? So we need a translator program, the converter program, which will translate our written words to machine language and ultimately to ones and zeros. So such a translator is called assembler. जो कि मशीन लैंग्वेज के रिटर्न कोड को कन्वर्ट करेगा, असेंबली लैंग्वेज के रिटर्न कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन में एंड देन टू वन एंड जीरो. आई होप इट्स क्लियर. वी आर मूविंग द एब्स्ट्रैक्शन लेवल क्लोजर टू द ह्यूमन बीइंग, इजंट इट? पहले हमें बिल्कुल समझ नहीं आई एग्जांपल, अभी ज्यादा बेहतर समझ आई है. बट विद रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. इसमें आ गए example, वही टास्क है बट इन वन गो, isn't it? Yes. लोड करें, सेल्स टैक्स लोड करें, परचेज प्राइस लोड करें, ऐड करें और सेव कर दें. So any instruction which allows us to do substantial tasks in one go without loading, storing, it is just like C equals to A plus B, isn't it? A को लोड करें, B को लोड करें, ऐड करें और स्टोर कर दें. इस तरह की हमारे पास जो एनवायरनमेंट है दैट इज ओनली प्रोवाइडेड बाय हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड C++ is one. Again similar everyday English words, they are unknown to the computer. Again we need a translator program which will convert our written code to machine language and to ones and zeros. Such a translator program is called Compiler. Compiler is the one which we have been introduced yesterday. Yes, sir. Visual Studio. That is the compiler, which will compile the code and ultimately convert overwritten code to machine language and ones and zeros. Ultimately, computer understandable form. So, as we are discussing languages and we are about to start, of course, the program, we should know a bit about the history of C++, from where it started. Just a couple of slides, interesting slides. It actually started in the Bell Laboratories back in 1980s. BCPL and B, Dennis Ritchie, Bell Laboratories added data type feature to the language. What is data type? Again, these are the concept of programming.
that we will be discussing. But at this time, once we can see it written over here. What is data type? किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जब वो उसको रखता है कोई कीवर्ड यूज होता है हम उसके वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ठीक है जी. Any other student? We can explain data type. कभी नाम सुना हो या इस नाम से कोई इंट्यूशन डेवलप हो रही हो. ठीक है. डाटा टाइप इज समथिंग कि आपने एक वेरिएबल है a, आप देखा आई विल स्टोर 5 in it. Why not to store h? Why not to store some punctuation mark? Isn't it? It means it's typeless. Once you define a as an integer, you can only store integers in this. If you want to store any alphabet, any character, any punctuation mark, it will result in error. So initially there were no data types. That will lead to complexities. So that's why computer scientists realized the fact that there should be data types. There should be separation, segregation among the data types. Otherwise, it will, of course, lead to complexities. So again, अब हर जगह प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई 80s में, लेट 80s में इन पर्टिकुलर, मिड 80s में. Different continents were using different styles of writing, different syntaxes. For example, we are saying a plus b semicolon is the formal way. Of course it is nowadays. Initially it could be a plus b comma. So do you think this program written in this language is portable to this? No. There will be errors. So here comes the need of standardization. कि हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड के थ्रू चेक किया जाए. पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स आगे ना, ब्रांडिंग बिस्किट के पैक के पीछे भी आप देखते होंगे, दैट इज ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. कि हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड डिफाइन है, उसके अगेंस्ट उसको मैच किया जस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी. वो रूब्रिक्स उसके डिफाइन है कि किस चीज़ को उसको यूज किया. तो लेट 90s में एक स्टैंडर्ड आया C++ का और वो चीज़ें उसमें पब्लिश हो गई. Then comes extensions, C को spruce up किया in Bell Laboratories again. Of course, introduced the concept of objects, जो कि of course we will study by the end of this course if we have much time, because it actually is a concept related to object-oriented programming. Objects are actually the real-world entities by which we actually drive our programming further. ठीक है ना. वो उस वक्त तक हमें क्लैरिफाई नहीं होता जब तक हम बेसिक कोर्स के थ्रू गुजरना नहीं. C++ is actually a hybrid style, object-oriented capabilities along with C style hybrid language. Okay. Again, the building block approach. For example, you have been tasked in the real world to make a car. So do you think you will start making a wheel? Of course. About wheel, what you will do? You buy it from the market. There are many things. Just like same is the case with programs. अब आपको कहा जाए पावर फंक्शन कैलकुलेट, पावर फाइंड करें 2 raised to the power 5, किस तरह फाइंड करेंगे? 2 को 5 लो. वेरी गुड. अब मैं कहूँ कि जी 2 raised to the power 30 30 टाइम्स लिखेंगे. फिर 50 टाइम्स 50. नहीं, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है. प्रोग्राम करें, जनरलाइजेशन अचीव करेंगे. प्रोग्रामिंग इज अबाउट अचीविंग द जनरलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लाइब्रेरी में एक फंक्शन अवेलेबल है पावर का, POW. उसको हम जस्ट इनपुट देंगे और वो हमें रिजल्ट रिटर्न कर. ये फंक्शन हम उस प्लॉटिंग में यूज कर सकते हैं. ये वो व्हील है जिसको हमने मार्केट से ली. If I compare it with the programming paradigm, there are things which are customized off the shelf. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसको कहते हैं कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ. शेल्फ पे पड़ी हुई चीज़ें उनको लेके यूज़ कर रहे हैं. लाइब्रेरी में बुक्स हैं, असाइनमेंट बनाने के लिए कंसल्ट करते हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं. Similarly, C++ has a rich collection of standard library, standard functions
available for our utility. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, लॉग, प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, फंक्शन कॉल करें, जहां डिफाइन हुए हैं उस फाइल को अपने प्रोग्राम का पार्ट बना लें इन अ स्पेसिफिक वे. In the next lecture, after the break, we will be discussing that specific way, how to make math library part of our program, to utilize these functionalities which are built in. We don't need to waste our time to do the things from the scratch. We have to collect the modules and get our task done. तो सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. ये सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी ही है कि आपने एक पावर फंक्शन है, आपने एक फाइल में उसका 200 लाइन्स का कोड नेट से लिख कर लगा दिया. ग्राफ प्लॉटिंग का फंक्शन है. अब ये पावर इसलिए कर रहे हैं, स्टार्ट है, समझ आ जाए. 50 लाइन्स का कोड लिखा, 10 या 20 लाइन्स का कोड लिखा, एक फाइल में हमने रख दी. पावर फंक्शन को हमने यूज किया, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. दोबारा पावर की जरूरत है, क्या आप दोबारा 50 लाइन लिखेंगे? आप इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे. ये है सॉफ्टवेयर रीयूज. एंड इमेजिन कि ये कोड 200 लाइन्स का हो. यू डोंट नीड टू राइट इट टाइम एंड टाइम अगेन. You just call that function and get the task. ये है जी concept, very important concept, software reusability. It actually points towards functions, the topic inside the course contents of this course, which we'll be discussing around midterm exams. So these are just the examples of previously used languages: Fortran, Formula Translator, कोबोल. जब हम इवन किड्स थे हम इनका नाम सुनते थे. ठीक है, इनिशियली यूज्ड इन बिजनेस ओरिएंटेड सेटअप एंड देन पास्कल बाय प्रोफेसर निकोलस फॉर टिपिकली द एकेडमिक यूज. ठीक है. सो आफ्टर द ब्रेक वी विल ऑफ कोर्स go through the modalities of actual programming.